So hello everyone. So in today's video we'll be discussing on the topic noun. So we'll be quickly seeing what is noun, what are the types of noun we have, and then we'll be solving some questions which will be based on noun and its principles, right? Okay, so first of all let us understand what is noun, right? So noun is nothing but it is a naming word. Whatever you can name it, जिसको भी आप नाम दे सकता है, that is called noun, right? It can be your name, it can be your place, it can be your emotions, it can be the name of animal, it can be anything. So we have six types of noun. First we have is proper noun, second we have is common noun, third we have is abstract noun, fourth we have is collective noun, fifth we have is countable noun, and sixth we have is uncountable noun, right? So these are the types of noun we have. So now we'll be diving into the problems, and then we'll solve the solution together, right? Okay, the first question says each of the girls have finished their project, right? So यहाँ पे error क्या है? See, each, first of all, it is singular in nature, so it has to be each of the girls has finished their project, right? Because here in this statement we are talking about each of the girls, right? So ये plural नहीं होगा. And then the second statement says the sceneries of Uti are breathtaking, right? So see, sceneries nahi hoga because it is an abstract noun, so which you cannot touch it. So it cannot be in a plural form, right? So it will be the scenery of Uti is breathtaking. Understood? Okay, let us see the third statement. It says she gave me many informations about the exam. So you also can spot it, right? ये तो अपने आप में ही बोल रहे हैं कि गलत है. So informations नहीं होता है because information is an uncountable noun, so it cannot be plural. So it will be she gave me much information about the exam, right? So it will be not many because it can't be counted, right? So it will be much information about the exam. Next, the poetries of kids are full of imagination. So first of all, you tell me what is a plural form of poem? So the plural form of poem is poetry, right? So you don't have to make it poetries. It has to be the poetry of kids are full of imagination. So it is plural in itself. So poetries नहीं होगा इसमें. So it will be poetry, right? Okay. क्योंकि इसका सिंगुलर ही पोएम होता है तो ये पोइट्रीज कभी नहीं होगा, पोइट्री ही प्लूरल है, राइट? ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 500 सोल्जर मार्च्ड इन द परेड, राइट? सो 500s नहीं होता है, आप हंड्रेड्स, मिलियंस, डॉलर्स में आप इसे लाइक यू कैन नॉट एड एस, राइट? सो इट विल बी 500 सोल्जर्स मार्च इन द परेड. So next maybe cattles नहीं होगा, it will be cattle are grazing in the meadow because cattles नहीं होता है, singular हो plural हो, it will always be cattle. Okay, next she bought new furnitures for the living room. So the same formula applies here. Furniture is uncountable, right? So it can never be plural. सो ये क्या होगा, ये अपने आप में ही फ्लोरल है. फर्नीचर इट्स फ्लोरल इन नेचर, सो इट विल बी शी बॉट न्यू फर्नीचर फॉर द लिविंग रूम, राइट? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन. माई हेयर्स आर टर्निंग ग्रे. सो हेयर इज समथिंग, यू नो, इट इज़ अनकाउंटेबल, सो इट विल बी माई हेयर इज़ टर्निंग ग्रे. ये ऐसा हो जाएगा, माई हेयर इज़ टर्निंग ग्रे, राइट? ओके, द नेक्स्ट, वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ एब्सेंट टुडे. सी यहाँ पे बहुत लोग का गलती होता है बिकॉज यहाँ पे वन बोला है तो सबको लगता है कि ये सिंगुलर होगा, बट वन ऑफ जो क्या है, इट इज़ सेग्रीगेटिंग आउट ऑफ ये जो आउट ऑफ मेनी फ्रेंड्स, जो वन जो है क्या है, एब्सेंट है, राइट? सो आउट ऑफ मेनी फ्रेंड वन इज़ एब्सेंट, सो ये क्या होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ एब्सेंट टुडे. आर यू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट? So ये one of my friends is absent today होगा. For example, if you want to say apple is your favorite fruits, right? So आप क्या बोलेगा, one of my favorite fruit
एप्पल इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फ्रूट्स. जब भी आप वन डालते हैं ना तो आपका जो नाउन है इट विल ऑलवेज बी फ्लोरल इन नेचर. ओके ओके. द नेक्स्ट इज़, यहाँ पे न्यूज़ आर नहीं होगा, न्यूज़ इज़ वेरी सरप्राइजिंग होगा. द न्यूज़ इज़ वेरी सरप्राइजिंग. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर गेव अस होमवर्क फॉर द वीकेंड. सो होमवर्क्स नहीं होता है, होमवर्क जो फ्लोरल ही होता है अपने आप में. सो इट विल बी माई टीचर गेव अस होमवर्क फॉर द वीकेंड. ओके. द नेक्स्ट, द स्पेटिकल्स इज़ ऑन द टेबल. सो सी, स्पेटिकल्स हो, ट्राउज़र हो, शूज़ हो, आपको अगर इफ़ यू वांट टू मेक इट सिंगुलर और फ्लोरल, ये क्या होगा, ये हमेशा एक कम्प्लीमेंट्री पेयर का साथ में आता है. फॉर एन एग्ज़ाम्पल, आप ये क्वेश्चन को रीराइट करके यू कैन राइट इन दिस फॉर्मेट, द पेयर ऑफ स्पेटिकल्स इज़ ऑन द टेबल. राइट, द पेयर ऑफ स्पेटिकल्स इज़ ऑन द टेबल. तो स्पेटिकल्स नहीं होगा, इट विल बी द पेयर ऑफ स्पेटिकल्स इज़ ऑन द टेबल. Okay, here there are many ships in the field. तो ships नहीं होता है, it will be there are many ships in the field. Right? So this is it. Okay, now you have to tell me group of ships को क्या बोलता है collective noun में. Okay, the last statement says mathematics are my favorite subject. So of course यहाँ पे mathematics is my favorite subject होगा, are नहीं होगा. So these are the rules and regulation which you have to take care, or which you have to implement whenever you solve question based on noun. Right? So this was it for today's video. Thank you for watching till the end.